Dear grade 6 student, now take out page number 5 of 19. Now I am explaining focusing a microscope कि किस तरह जो है माइक्रोस्कोप को फोकस करना है. The correct way to focus a microscope is to start with the lowest power objective, the smallest objective first. Dear grade 6 student, माइक्रोस्कोप को फोकस करने का जो करेक्ट वे है वो सबसे जो पहले आप जो है लोवेस्ट पावर ऑब्जेक्टिव या स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करोगे. आफ्टर दैट while looking from the side, use the coarse focus to bring the lens down as close as possible to the specimen without touching it. स्पेसिमेन क्या है? वो चीज़ जो हम माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं. साइड से देखने के दौरान कोर्स फोकस यूज करें ताकि जितना जल्दी हो सके लेंस जो है वो स्पेसिमेन की तरफ हो विदाउट टचिंग इट. Now look through the eyepiece and use the coarse focus to move the objective lens upward until the image is sharp. ऑब्जेक्टिव लेंस को ऊपर करने के लिए कोर्स फोकस यूज करते हैं उस टाइम तक जब इमेज शार्प हो जाए. Once the image seems sharp with the lower power lens, you should be able to turn the revolving nose piece to the next most powerful objective lens. If the image is not in sharp focus, then make small turns of the file focus wheel until it is. Continue with even higher power objective lenses if you wish, and fine focus each. Dear grade 6 student, now I am explaining. Let's find out. To observe the parts of an animal cell method. Gently scrape the inside of your mouth with a toothpick. Then with a spatula, scrape some of the white material on the toothpick into a drop water on a glass slide. Spread the material and cover it with a cover slip. Examine the material with a microscope. What parts of the cell can you see? Draw. What do you see? Dear grade 6 student, एनिमल सेल का किस तरह ऑब्जर्वेशन करना है? थ्रू टूथपिक आपने माउथ में उसको जेंटली स्क्रैप करना है. आफ्टर जेंटली स्क्रैप आपने जो इसके साथ जो वाइट मटेरियल जो होगा अटैच होगा थ्रू स्पैचुला उसको लेके ग्लास स्लाइड पे आपने वाटर डाल के उस पर स्प्रेड करना है. स्प्रेड करने के बाद जो है उसको कवर स्लिप से कवर करके स्टडी के लिए आपने माइक्रोस्कोप में रखना है. आप जो भी देखोगे ऑब्जर्व करोगे आपने इसको ड्रा करना है. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू ऑब्जर्व द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल मेथड. केयरफुली कट एन ऑनियन इन हाफ एंड peel off a small piece of the skin which lines the separate overlapping section of the onion. Put a piece of the skin which is 1 cell thick on a microscope slide and add a drop of weak iodine solution to it. डियर ग्रेड 6 स्टूडेंट, इसके लिए आपने जो है आयोडीन सोल्यूशन बनाना है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड ना हो, वीक हो. कवर इट विद अ कवर स्लिप. स्टडी द टिश्यू अंडर द माइक्रोस्कोप. द आयोडीन विल स्टेन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल येलो एंड एनी स्टार्च ग्रेन्स इन द सेल विल स्टेन ब्लू. ड्रा एंड लेबल व्हाट डू यू सी. डियर ग्रेड 6 स्टूडेंट, स्टेन जो है वो हम कलर यूज़ करते हैं. स्टेन क्या है? कलर होता है. हम जो भी चीज़ जो है माइक्रोस्कोप में जो है स्टडी करते हैं तो सेल या इस टिश्यू पे हम कोई भी कलर डाल लेते हैं और उस कलर से जो है वो चीज़ क्लियरली दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल which means they carry out all of their life process as one single cell. They take in food, excrete waste, move, grow and reproduce. Most unicellular organisms are so small that they can only be seen under microscope. However, some are visible to the naked eye. Organisms like the amoeba and euglena are single-cell organisms. They are the oldest form of life. They existed about 3.8 million years ago. Bacteria, unicellular algae, and unicellular fungi are the main groups of unicellular organism. Dear grade 6 student, यहाँ पे आपको बैक्टीरिया, यूग्लिना, अमीबा भी गिवन है.